Hello, today we will see dining philosopher problem. This is very interesting problem. A philosopher spend their lives alternating thinking and eating. एक assumption या ये जो problem है इसमें 5 philosophers है and those philosophers alternatively सोचते हैं या तो खाते हैं, यानी alternating thinking and eating. And when they are thinking they cannot eat, and when they are eating they cannot think. At a time सिर्फ एक ही काम उनको करना है, either they can think or they can eat. And when they eat they have to eat with 2 forks. They cannot eat with 1 fork. Okay, उनको 2 स्पून से ही खाना है, 1 स्पून से वो खाना नहीं खा सकते. Okay, so that is the problem. And here on the table there is one rice bowl in the middle. 5 philosophers are there and 5 spoons are there. So if there are 5 spoons and we have to allow we have to allow to eat when the philosopher has 2 spoons, then at a time nobody can, or at a time 5 philosophers cannot eat at a time. So philosophers don't interact with their neighbors, occasionally try to pick up 2 chopsticks one at a time to eat from bowl. Need to both eat then release both when done. जब खाना उनको, when they want to eat they have to pick up 2 spoons, and when they stop eating they have to put down 2 spoons. जब उनको खाना खाना है तो दोनों स्पून्स उनके हाथ में होने चाहिए, और जब उनका खाना ख़त्म हुआ है, when they stop eating they have to put down both the spoons on the table. In the case of 5 philosophers, shared data, bowl of rice data set and semaphore chopstick initialized to 0. The structure of philosopher I: do wet chopstick I, wet chopstick I plus 1 mod 5, why 5? Because we have 5 philosophers. So wet chopstick I plus 1 mod 5 they can eat. अगर ये condition satisfy हुई है mod 5 तो वो खाना खा सकते हैं. सिग्नल चॉपस्टिक सिग्नल चॉपस्टिक I plus 1 mod 5 they can think while true. What is the problem with this algorithm? Now this is the solution for dining philosopher problem, so that they can eat and think alternatively. But what is the problem with this solution? Then there is a problem for deadlock handling. Deadlock यहाँ पे occur हो सकता है. So to avoid this deadlock, allow at most 4 philosophers to be sitting simultaneously at the table. Okay, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें 5 की जगह पे 4 फिलोसोफर्स को अलाउ करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. Allow philosopher to pick up the forks only if both are available. Okay, अगर दोनों ही अवेलेबल है तो ही फिलोसोफर खाना खा सकते हैं. और तीसरा है यूज़ एन असिमेट्रिक सोल्यूशन, दैट इज़ एन ऑड नंबर फिलोसोफर पिकअप फर्स्ट द लेफ्ट चॉपस्टिक एंड देन राइट चॉपस्टिक. जो फॉर एग्जांपल अगर 5 फिलोसोफर बैठे हुए हैं तो उसमें ऑड नंबर फिलोसोफर कौन से हैं? 1, 3 एंड 5. सो ये जो 3 लोग हैं 1, 3 एंड 5, ये 1, 3 और 5 जो है उनको पहले लेफ़्ट चॉपस्टिक उठानी है, उसके बाद राइट चॉपस्टिक उठानी है. ओके, देन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. इवन नंबर अगर फिलोसोफर है तो दे पिक्स अप फर्स्ट राइट चॉपस्टिक एंड देन लेफ़्ट चॉपस्टिक, यानी 2 और 4 ये जो फिलोसोफर है वो राइट चॉपस्टिक उठाएंगे एंड देन लेफ़्ट चॉपस्टिक उठाएंगे. So these are the solution or deadlock handling